address for the chief guest in English later on. He will also arrive for the meeting a little later at 10:30. Now I request the speakers, Swami Atmashraddhanandaji Maharaj, Swami Shuddhidanandaji Maharaj, Swami Achyuteshanandaji Maharaj, and Dr. Somnath Banerjee to come over to the dais and light the lamp. And Somnath Banerjee. I now request Swami Shakatmanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Gurgaon, to give the welcome address.
Shivadishanand Ji Maharaj to come over to the stage with Sri Shubhankar Banerjee. I request him to sing the opening song before Shantatma Ji introduces the speakers.
Swami Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj is from Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, and he was accompanied by Sri Shubhankar Banerjee on tabla. Now I invite Swami Shantapanandaji to give the welcome address. Om Niranjanam Nityamanantarupam Bhaktanukampadrita Vigraham Vai Ishavataram Parameshamityam Tam Ramakrishna Sirasaramami Pitarme Dahiga Shakti Ramakrishna Stitahiya Sarvavidya Swarupam Tam Sharadam Pranamamyam Paratatve Sadayam Ramakrishna Samadhiya Yo Dharma Sthaparado Virayashantam Namami. The reverend monks on the dais, most respected monks in the audience, as well as friends and devotees who have assembled for this beautiful session this morning, is on the topic the importance of developing character according to Swami Vivekananda. We have for this session two of our eminent speakers, most of them well known for their erudition, scholarship, as well as oration. In Hindi, it will be Swami Atmashraddhanandaji, who is the secretary of Ramakrishna Mission Ashrama, Kanpur, who is earlier the editor of Vedanta Keshri, and he is well known as a speaker. He has got interactions with the youths and so on. Then the speaker in English will be Swami Shuddhidanandaji, president of our Advaita Ashrama. Obviously, it's such an important post he is holding. And Maharaj also speaks very regularly in many important forums. He is invited for all major functions and so on. So we are really looking forward to listening to these two scholars. For the afternoon session on Sanghajan more than for his erudition, he is known for his forthright expression. He is very frank and fearless. We have seen on many occasions. And of course, we have the capital Somnath Bhattacharya, who is a very, very well-known writer, a prolific writer in Bengali, and a very well-known speaker. So it's going to be a very interesting whole day session planned by the great Swami Amritarupanji, secretary of this beautiful ashrama which has completed 100 years of useful existence in service to society. Now coming to the topic proper itself, this adage says, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. So character is so important. So Swamiji also emphasizes tremendously on this idea of developing a good character. Swamiji always says that spirituality is the basis, is the foundation of life. Really in this, the secret of work, this lecture on Dharma Yoga. He talks about this. Spiritual health
is the best help and the most desirable help which one can give to others. Because it says spirituality is the basis of all our activities. Even our physical needs cannot be fulfilled completely unless one has a spiritual attitude. Similarly, he says next comes the intellectual help or help at the level of the mind. And finally comes to help at the physical level, at the bodily level. He says that hunger can be satisfied, but then very soon it will appear again. Unless our nature changes, we cannot be really gotten of all our needs or whatever we would desire. So, difficulties, problems, etc. would again and again arise. All these can be conquered if our ignorance is removed. See, basically, it's because of ignorance, all our misery and suffering is due to ignorance, which often result in evil actions and so on. So let us bring light, he says, pure and spirituality, purity and spirituality. And this purity and spirituality is possible only if there is a transformation. He says the world cannot be converted into a charitable asylum where we keep on doling out various kinds of physical aids or physical level services. So he says you need to develop this kind of purity, and that can come through proper karma. He says constantly if you do good actions, they produce good karma. And similarly, bad actions produce bad karma. And at any point of time, he says beyond what the sum total of all this. It's what he says, the samskaras. Samskaras are the tendencies of the mind. And the sum total of all our past samskaras is what manifests at any given moment. So it's very necessary to develop the right kind of samskaras. He says if there is a lake and when the ripples rise and when they die down, they are not completely eradicated but they leave a mark. So in the Karma Yoga also, when we do any action, a karma bija is left in the chitta, and this gives rise to similar actions, similar activities time and again. So unless we do constantly good action, good karma, these good tendencies will not be performed, will not be deposited, and we will not be good. So if one has to be really good, if one has to really develop an outstanding personality, we need to have these samskaras. This is what he calls as character. So when we talk of service to the nation, that kind of an activity, all that we want to do good to others and all that will be possible only we have a good character, and that is possible only if you do good karma, as a result of which there will be good samskaras will be developed, leading to the ultimate formation of good character. This topic of course will be dealt with in great detail by both the speakers. I'm sure we are going to have a very interesting and very illuminating session. I once again welcome all the speakers, particularly the speakers for the first session, namely Swami Atmashraddhanaji and Swami Shuddhidhanaji. Namaskar. Thank you, Shantaratmanandaji Maharaj. Now, felicitation of the guests. I call Yajnadharanandaji and Isha Premanandaji to do the felicitation. First, Isha Premanandaji will do felicitation to Swami Achyuteshanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission, Narottam Nagar.
Vivekananda will do felicitation to Swami Atmashraddhananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Ashrama, Kanpur. Swami Shuddhidananda Ji Maharaj, Adhyaksha, Advaita Ashrama, Varanasi. And Dr. Somnath Bhattacharya, Associate Professor, Mechanical Engineering Department, Yadavpur University. Thank you, Swami Yajnadananda and Swami Isha Premananda Maharaj. Now I call upon Swami Atmashraddhananda Ji to speak on the topic, the need of developing a strong character according to Swami Vivekananda. He will speak in Hindi. मंच पर आसीन श्रद्धेय स्वामी Felicitation जी महाराज, प्रिय स्वामी शुद्धिदानंद जी, प्रोफेसर सोमनाथ जी, सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ सन्यासीगण, अन्य भक्तगण, देवी और सज्जनों, ये अत्यंत ही सौभाग्य है हमारा कि हम आज के इस युग में, जहां हमारा ज्यादातर समय बाहरी वस्तुओं को लेके बीतता है, उस व्यस्त समय के बीच में हमने एक ऐसा एक अवसर पाया। यहां हम एकत्रित हुए हैं इस हॉल में और एक शुभ चिंतन में, एक सद चर्चा में, और उसके विषय में विभिन्न आयामों से हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास जो अवसर है वो भी बड़ा शुभ है। अवसर यह है कि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सोसाइटी जमशेदपुर में अब 100 साल से भी अधिक हो गया है। इसमें किसी भी संस्था को प्रारंभ करना लगभग आसान होता है, लेकिन उसे चलाना और वे भी इतने लंबे समय तक चलाना कोई सहज बात नहीं होती। इसके लिए सच में हम भगवान को तो प्रणाम करेंगे ही, उनकी कृपा के प्रति हम आभारी हैं ही, साथ ही उन सब साधुओं के लिए
जिन्होंने पिछले 100 साल और उन सब शिक्षकों ने, स्वयं सेवकों ने, उन सब दानकर्ता ने जिन्होंने इस संस्था को चलाया है, उन सबको भी यथोचित अभिवादन करते हैं कि उन्होंने एक इतना शुभ कार्य 100 साल तक और भी जानने कितने ही शताब्दियों तक ये काम चलता रहेगा, इसलिए उन सबको साधुवाद। आज इस सभा का जो ये प्राथमिक सत्र है, इसका जो हमारे पास जो विषय है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा प्रासंगिक है। चरित्र का निर्माण। अब ये एक बात है जिसके बारे में कभी कभी लोग सोचते हैं, हमारे पास अगर शिक्षा है, हमारे पास धन है, हमारे पास पद है, तो और क्या चाहिए? हमारे पास मानो सफलता आ गई। लेकिन सफलता का रहस्य क्या, या सफलता क्या हम यहीं तक सीमित कर सकते हैं? अब देखिए, एक उदाहरण लीजिए। एक महिला जो नर्सिंग में जिसको ट्रेनिंग थी, जिसके पास कुछ डिग्रीज थी, जिसने नर्सिंग की उसमें डिग्री की हुई थी, वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अब एक व्यक्ति को घर में अपने बच्चे में की देखभाल के लिए एक नर्स की आवश्यकता थी, तो उसने यथासंचित जिस भी माध्यम से पता लगाया कि ऐसे ऐसे एक महिला की उपस्थिति है, उपलब्ध है, जो नर्सिंग का डिग्री है, तो चलो उसको हम रख लेंगे, उसको जितना पैसा चाहिए देके रख लेंगे। लेकिन उसने साथ में भी पता लगाया कि वो ठीक है, उसके पास ये डिग्री है, लेकिन ये भी पता लगाया कि वो कैसी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। तो पता चला कि उसको तो बहुत जगह से, और कारण ये है कि वो बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करती। उसका साथ में वो थोड़ी उनके साथ मानो रफ रहती है। इसके कारण बहुत जगह से उसकी नौकरी चली गई। तो स्वाभाविक है उस व्यक्ति ने उस महिला के पास सब कुछ गुण होते हुए भी उसको अपने पास नहीं रखा। तो ये एक बात को इंगित करता है कि सफलता सिर्फ वहीं तक नहीं है जिसे हम कहते हैं कि भौतिक चीजों का की जो सामग्री है, या हमें पैसा मिल जाए या हमें अन्य चीजें मिल जाए। हमें साथ ही साथ हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसे लोग हैं, हमारा चरित्र कैसा है, इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसी बात को लेके आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और एक देखिए बात, हमारे समाज में बहुत सी चीजें होती रहती। जब हम एक सभ्यता में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो बहुत सी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। जैसे बांध बनाने हैं, डैम्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, या फिर बिल्डिंग्स बनानी है, या फिर सड़कें बनानी है, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना है, कुछ कानून बनाने हैं, कुछ शिक्षा की पद्धति बनानी है, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस चलाने हैं। इन सब में हम एक चीज पाते हैं, यद्यपि हम एक बहुत सी चीजें कुशलतापूर्वक कर लेते हैं, अगर वहां पे चरित्र का अभाव रहता है तो ये सारी की सारी चीजें मानो हमारे पर बोझ बन जाती है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अगर उसने इंजीनियरिंग का, उसके पास एक डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, और वो उसको डैम बनाने की क्षमता तो है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो देखेंगे कि उसी ज्ञान का वो दुरुपयोग करता है कि कैसे कम सीमेंट डाल के डैम बनाया जाए, या कम किसी और चीज को डाल के कोई बिल्डिंग बनाई जाए, कोई ब्रिज बनाया जाए। तो स्वाभाविक है ऐसी चीजों की जो लागत तो कम होती है, पैसा तो उसके लिए बच जाता है, लेकिन उसके बाद में जो दुर्घटनाएं होनी है, जो लोगों की जान माल में जो हानि होनी है, वो भी मानो पक्की हो जाती है। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ जीवन का एक हिस्सा जिस पे बहुत ज्यादा हम जोर देते हैं, वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और ये बात स्वामी विवेकानंद ने
बड़े ही सुंदर भाव से अपने विचारों में, अपने विभिन्न प्रवचनों में दी है। अभी अभी श्रद्धेय स्वामी शांतात्मा जी ने जब इंट्रोडक्शन दी तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के प्रथम अध्याय से बहुत कुछ उद्धृत किया और उस अध्याय का नाम ही यही है कि कर्म का चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। असल में चरित्र तो कर्म से ही उत्पन्न होता है। तो उसमें एक बात जो उन्होंने उल्लेख के उसका किया कि यद्यपि हमारे पास सब कुछ हो सकता है, अगर चरित्र नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी मानो हम अभाव से ग्रसित हैं। चाहे आप एक देश में कितने भी अस्पताल खोल दें, कितने भी अनाथालय खोल दें, कितनी भी ऐसी चीजें खोल दें जिससे कि लोगों का जन कल्याण होता हो, लेकिन मनुष्य का जो दुख का अंत है वो सिर्फ इन चीजों से नहीं होता। उसका दुख तभी होता है, दुख का अंत तभी होता है जब उसके अंदर एक शांति हो और पवित्रता हो। ये शांति और पवित्रता चरित्र निर्माण से ही आती है। जब तक मनुष्य अपने अंदर से नहीं बदलता तो बाहरी बदलाव उसे एक सीमा तक ही लेके जाता है। तो हमारे सामने जो विषय है इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो बड़ी प्रासंगिक है और अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी। चरित्र निर्माण की प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस सब समय रहेगी, क्योंकि हमें चरित्र जीवन का ही एक अंग है। हमने जैसे कोई भवन निर्माण करना हो तो हमारे सामने भवन के लिए, बनाने के लिए कुछ कुछ सामग्री रखी होती है, चाहे ईंट हो, सीमेंट हो या फिर सरिया हो और अन्य जो पदार्थ होते हैं। वैसे ही चरित्र निर्माण के लिए हमारे पास क्या सामग्री है जिसको लेके हम अपने इस चरित्र का निर्माण करेंगे, ये एक विषय है। पहले तो क्या है कि चरित्र की जो आवश्यकता है वो मनुष्यों को ही होती है। पशुओं में चरित्र की आवश्यकता नहीं होती। पशु इस विषय में सोचते नहीं, पशुओं में वो क्षमता नहीं। कभी सोचते, हाँ कह सकते हैं कि किसी के पास कोई पेट हो, कह सकते हैं हाँ उसके पास एक अच्छा कुत्ता है, वो ट्रेन्ड कुत्ता है। लेकिन कुत्ता या डॉग डजंट थिंक, उसको ये नहीं लगता कि मैं एक महान कुत्ता बनूं या आई शुड बिकम मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर। ऐसी उसमें भावना नहीं होती। ये भावना सिर्फ मनुष्यों में ही होती है। चरित्र निर्माण की जो कला है और उसका विज्ञान है, उसकी जो परंपरा है, वो सिर्फ मनुष्यों में ही होती है। तो चरित्र का फिर क्या आदर्श है? कौन सा हमें चरित्र बनाना है? अब देखिए, चरित्र शब्द भी ऐसा है कि हम इसमें कभी कभी कहते हैं उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, तो लेकिन चरित्र तो संस्कारों का समूह है। जैसे कि पहले कहा गया कि ये तो चरित्र जो है संस्कारों का समूह है, तो उसका चरित्र अच्छा है। हम कहते ही हम चरित्र अच्छा है, कहना चाहिए उसका सदचरित्र है, उसका अच्छा चरित्र है, अर्थात उसका जो संस्कारों का समूह है वो बड़ा अच्छा है। उस संस्कारों के समूह ने उसके व्यक्तित्व को ऐसा ढाला है, ऐसी उसमें एक शुभता, उसमें ऐसी पवित्रता, ऐसी उसमें एक ईमानदारी है कि हम उस पर मानो निर्भर हो सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो हमारे जीवन का, हमारे समाज का एक बड़ा ही मूल्यवान व्यक्ति है, क्योंकि उसका जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र है। तो हमारे पहले आदर्श क्या है? हमारे पास आदर्श है कि चरित्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारी 3 चीजें हैं, हमारी 3 मानव क्षमताएं हैं, फैकल्टीज हैं। एक है हमारे सोचने की क्षमता, दूसरा हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो हमारा एक सहानुभूति रहती है, एक भाव रहता है, उसकी क्षमता, और तीसरी काम करने की क्षमता। इसको कहा हेड, हार्ट एंड हैंड। स्वामी जी ने 3 शब्दों का इसको तीनों को जोड़ के हमारे सामने रखा। वी वांट एन आइडियल मैन, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा आदर्श व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर सोचने की क्षमता भी हो और दूसरों के लिए अनुभव करने के लिए, उनके दुख को अनुभव के लिए, सहानुभूति के लिए उसमें क्षमता हो। और सिर्फ यहीं तक नहीं, उसमें कार्य क्षमता भी हो जिससे कि इन विचारों को वो जीवन में ला सके। सिर्फ अपने जीवन तक ही अगर हम अपने, देखिए हम बातें तो बहुत करते हैं। काशी में एक दुकान पे लिखा हुआ था, यहाँ ज्ञान मत बांटिए, यहाँ बहुत ज्ञानी है। अर्थात ज्ञान देने वाले, बहुत सी चीजें, अपनी बातों को कहने वाले तो बहुत होते हैं,
हमें उससे भी आगे बढ़ना है, और वो है कि उन विचारों को कैसे जीवन में उतारा जाए। तो पहले हम प्रारंभ करते हैं, विचारों को सुनते हैं, बहुत सी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी आगे हमारे में क्षमता होनी चाहिए कि हम सोच सकें, और सोचने की क्षमता में उसमें परिवर्तन हो, उसमें ऐसी क्षमता हो कि कैसे हमारा और दूसरों का कल्याण हो सके। तो ये पहला जो अंग है वो है हमारे अंदर जो मस्तिष्क, हमारे जो सोचने की क्षमता है, उसमें एक उत्कृष्टता का आदर्श हो। वैसे ही अक्सर लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मान लीजिए एक चील है या एक बाज है, जिसकी हम जानते हैं कि चील की क्षमता उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, वो ऊपर, बहुत ऊपर उड़ जाती है, मीलों तक, और लेकिन उसकी आंखें बड़ी पैनी होती हैं, तो नीचे क्या पड़ा है वो देख लेती है। तो कुछ व्यक्ति हो जो बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, उनकी सोचने की क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका मन कहाँ पे है? उनके शायद नीचे पड़ा हुआ एक मरा सड़ा एक चूहा, उसको खाने के लिए वो इतनी ऊपर से नीचे तक आ जाती है। तो वैसे ही एक व्यक्ति का मन है कहाँ पे, वो चाहता क्या है, तो उस मन में क्या उसमें मन में क्या पवित्रता है, या मन में वही लोभ है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, सब इन सद्गुणों का अभाव जो है, या दुर्गुणों का जो प्रभाव है, तो इसके होने से क्या वो सच में उसमें कोई प्रगति हुई है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक व्यक्ति हो सकता है उसने सारी एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय कंठस्थ कर दिया, इतनी उसमें स्मरण शक्ति हो, जानने की क्षमता हो, लेकिन वो उस व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं, इसने सिर्फ 5 ऐसे विचार लिए जो उसके जीवन को स्पर्श कर गए, जो दूसरों के लिए बड़े उपयोगी है, और उसको जीवन में उतारने का प्रयास किया। अर्थात ये प्रयास, ये जीवन में उतारना ही असल में जो चरित्र का एक मूल आधार है। और तीसरी बात है कि हम कैसे उसको जीवन में उतार सकें, हमारे कार्य करने की क्षमता क्या है, हमारे जो कैपेसिटी टू वर्क, अर्थात सिर्फ बातें ही नहीं, सिर्फ अंदर से सहानुभूति नहीं, लेकिन हम क्या दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो करने की क्षमता, वो संयोजक, योजकः तत्र दुर्लभः, संस्कृत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कहता है, योजकः तत्र दुर्लभः, योजक जो चीजों को इकट्ठा कर सके और उस अपेक्षित नतीजे को निकाल सके, जिससे कि जिसको वो चाहता है, जो उसके आदर्श के साथ में है। तो इन तीनों गुणों का सामंजस्य ही स्वामी विवेकानंद के अनुसार यही चरित्र निर्माण का आधार है। लेकिन और आगे बढ़ते हुए सोचते हैं, हम हैं कौन? हम मनुष्य, व्हाट आर वी एज ह्यूमन बीइंग्स? हम हैं कौन? मनुष्य क्या है? मैं कौन? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर चरित्र निर्माण के साथ भी जुड़ा है। एक तो ये अपने आप में एक दार्शनिक विचार है, एक तात्विक विचार है कि हाँ मैं कौन हूं, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन और भी गहरा जो है कि मैं कैसे अपने आप को समझूं, तो क्या मैं ये सिर्फ शरीर हूं? अब इसको लेके हम जानते हैं कि बहुत सी चीजें कर चुके हैं हम लोग, पूरा मेडिकल साइंस है इसको लेके स्टडी करता है कि एक मनुष्य, एक शरीर क्या है। पहले सिर्फ वहीं तक सीमित था, अभी और भी आगे बढ़ के बोलते नहीं, मनुष्य के साथ में उसके बहुत से जो रोग होते हैं वो शरीर से नहीं, वो मन से आते हैं, उसको बोलते साइकोसोमैटिक डिजीजेस। तो मनोविज्ञान भी उसके साथ जुड़ा हुआ। तो क्या हम शरीर और मन, इन दोनों का जो सम्मिश्रण है, आर बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, कि हमारे अंदर एक तो शरीर है जिसके अंदर हम उसका भार कितना है, उसका आकार क्या है इत्यादि सब जानते हैं, और जो मन है, मन में विभिन्न विचार हैं, संकल्प है, विकल्प है, विभिन्न प्रवृत्तियां उठ रही हैं। तो क्या हमारा असल स्वरूप सब यहीं तक है? इसको लेके जितनी चर्चा, जितनी गहराई से चिंतन भारत में हुआ है, हमारी सनातन परंपरा में हुआ है, वो शायद और किसी परंपरा में इतनी गहराई में नहीं है। हाँ, इसी परंपरा से निकली हुई और एक परंपरा जैसे बुद्ध धर्म है, उसमें भी इसके विषय में काफी चिंतन है, लेकिन विशेष जो चिंतन है वो हम पाते हैं उपनिषदों में, गीता। वहां पे हमें मानो अपने ही अनुभवों के आधार पर
ये सुनने को मिलता है। हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो महान चिंतक रहे, आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, जो परंपरा रही है, उससे हमें सुनने को मिलता है। और ये बात बार बार स्वामी विवेकानंद के विचारों में, श्री रामकृष्ण के उपदेशों में बार बार आती है कि मनुष्य सिर्फ शरीर और मन नहीं है, मनुष्य का आधार दिव्य है, उसकी चेतना है, कॉन्शियसनेस। व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? वो कौन सी चीज है, वो कौन सी जो एक साक्षी चेतना है जो मनुष्य को देख रही है, जिसमें कहते हैं हाँ मैं सोया हुआ था, मैं जगा हुआ था, मैं बड़ा गहरा ऐसा स्वप्न ले रहा था, स्वप्न रहित नींद ले रहा था। ये जो अंदर से एक साक्षी है, ये कौन है? इसको लेके पूरा एक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, तो तीनों अवस्थाओं को इसके बारे में उसके बारे में चर्चा करता है। तो उसमें एक बात जो हमारे व्यवहारिक चरित्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में लेनी है कि हम मूलतः शरीर मन से परे एक दिव्य चेतना है, इसे आत्मा कहते हैं। अब अच्छा, आत्मा शब्द बोलने से कोई कुछ लोग सोचते हैं आत्मा शायद एक तरह का भूत होता है। ऐसा तो नहीं, भूत भी अपने आप में एक शरीर होता है। उन सब से परे एक अंदर जो ऐसी चीज है जिसका ना कोई इसका स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे तो अपने प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं कौन हूं अगर मैं सोचूं, तो अंदर से जो आई मैं निकलता है, उसका अगर मैं विश्लेषण करूं तो उसका सबसे गहनतम जो विश्लेषण ये है कि मैं वो आत्मा हूं जिसको ना कोई काट सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है, अर्थात पांचों तत्व उसको प्रभावित नहीं कर सकते और न किसी भी चीज से प्रभावित होती है इस संसार में। अब देखिए, इसका एक सबसे व्यवहारिक हमारे जीवन में जो उपयोग है, हम सबके जीवन में कभी ना कभी निराशा का भाव आता है, अवसाद का भाव आता है। और आजकल तो मानो डिप्रेशन, मानसिक अवसाद इतना फैला हुआ है कि यूएनओ की या WHO की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सबसे बड़ा जो रोग है यही होगा। अपने बारे को शरीर सोच सोच के, मन के विभिन्न विचारों के साथ अपने आप को लगा लगा के हम अपने असल स्वरूप को भूल गए। तो अगर इस विचार को भी अपने सामने रखें कि नहीं, मैं मूलतः आत्मा हूं, मैं मूलतः इन सबसे मुक्त हूं, मैं ना मेरे में राग है, न द्वेष है, ना मेरे में कोई भय है, न किसी प्रकार की घृणा है, मैं इन सबसे मुक्त हूं, यही एक चरित्र निर्माण का एक बहुत सुंदर एक रास्ता होता है। तो पहली बात हमें ये समझ लें कि हमारे अंदर वो दिव्य चेतना है और उस चेतना का विकास अपने ही हमें इस शरीर मन के माध्यम से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए कुछ विशेष प्रकार के हमारे सामने प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक अनुशासित जीवन की आवश्यकता होती है। अनुशासित जीवन ही मानव चरित्र निर्माण का एक मूलभूत उसका प्रशिक्षण करने का एक वस्तु है। अनुशासित जीवन अर्थात क्या? देखिए, हमारे जीवन में बहुत से कष्ट इसलिए हैं कि हमारे जीवन में अनुशासन नहीं। अनुशासन सिर्फ वहीं तक सीमित मत करें कि जो स्कूल की असेंबली में हम सीधे खड़े होते हैं या सीधे चलते हैं, वहीं तक हमें अनुशासन को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका और भी एक बेहतर और गहनतर एक जो आयाम है वो हम भगवद गीता में पाते हैं। और ये बात उपनिषदों में भी है। कहते हैं अपने जीवन को अनुशासित करो अर्थात मर्यादित करो, उसमें एक मर्यादा हो। भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक का हमें स्मरण आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो योग है अर्थात जो अनुशासन है, जीवन का जो आंतरिक अनुशासन है, वो हमको दुख से मुक्त कर देता है। कब? दुःखः मतलब दुख से दूर कर देता है। कब? जब जीवन में एक समरसता आती है, जब आहार में कितना खाना है, कितना हमें मतलब बहुत ज्यादा आहार नहीं लेना, बहुत कम आहार नहीं, युक्त आहार। और विहार अर्थात अपने आप को कैसे एंटरटेनमेंट, कितना हमें करना है, कितना नहीं करना है। या युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कितना हमें कार्य करना है। अब इतना नहीं कि हम इतने थक जाएं कि हमारे पास सोचने का समय ना हो, इतना कार्य हो कि हमारे पास आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता ही मानो एक प्रकार से खत्म हो जाए।
और युक्त स्वप्नावबोध से कितना हमें सोना है, कितना जागना है, अर्थात पूरा जीवन एक मर्यादित हो। इस मर्यादित जीवन से ही व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है। ये एक बात हम गीता में बार बार पाते हैं। और आगे कहते हैं कि जब चित्त एकदम शांत हो जाता है, अर्थात मन एकदम शांत हो जाता है, तो ऐसे ही है जैसे कि चित्त के ऊपर में जो बहुत सी लहरें थी वो लहरें शांत हो गई। तब व्यक्ति मानो सब प्रकार के उन दुखों से दूर होके अपने स्वरूप को समझता है। तो ये मानो ये एक प्रकार की एक टूल है, एक रास्ता है, एक तरीका है जिससे हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। कुछ गुण है, कुछ सद्गुण है जिनकी चर्चा स्वामी विवेकानंद बार बार अपने उपदेशों में करते हैं। और इन गुणों को अगर हम जीवन में उनका उपयोग, उनको जीवन में लाने का बार बार प्रयास कर सकें, तो तब भी हम देखते हैं हम जो चरित्र निर्माण का विषय लेके हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें बहुत सहायता मिलती है। स्वामी जी ने कहा पहला जो गुण है वो है हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। इस गुण की हमें जितनी हो सके बार बार इसके विषय में सोचना चाहिए। आत्मविश्वास का एक दूसरा एक हिस्सा भी है, वो है आत्मनिर्भरता। आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ बातें होती हैं, आत्मनिर्भर भारत, वो सच में आत्मविश्वास की बात है कि आत्मविश्वास, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे में ये करने की क्षमता है। सब समय सोचना कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो सच में अगर क्षमता होगी तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सो ये करने की क्षमता के बारे में सोचना है, अपने आप में विश्वास रखना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लोग कहते हैं तुम इसमें विश्वास करो, तुम उसमें विश्वास करो, मैं कहता हूं अपने आप में विश्वास करो। इतनी सुंदर बात स्वामी विवेकानंद हमारे सामने कहते हैं, आत्मविश्वास। ऐसी और कोई शक्ति नहीं, स्वामी जी कहते हैं, जो आत्मविश्वास से बेहतर हो। हम सब समय अपने अंदर जो गुण है, अंदर जो क्षमता है, अंदर जो एक अनंत शक्ति है, उस पर विश्वास होना चाहिए। अच्छा, आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाए, सोचने लगे कि हाँ सिर्फ मैं ही ठीक हूं, मेरे में ही क्षमता है, दूसरों में तो क्षमता है नहीं, ये तो बड़ा ही अनुचित होगा। तो अहंकार में और आत्मविश्वास में यही अंतर है। अहंकार तो सिर्फ अपने आप को मानता है, आत्मविश्वास अपने आप में विश्वास करते हुए भी दूसरों पर भी श्रद्धा रखता है। जैसे मेरे में शक्तियां हैं, मेरे में कुछ गुण हैं, मेरे में अनंत है, शक्ति उत्पन्न है, वैसे ही सभी में है। तो देखेंगे आत्मविश्वास और साथ में ही उसके विनयता दोनों इकट्ठे चलते हैं, व्यक्ति विनम्र भी हो जाता है। और इस आत्मविश्वास से क्या क्या नहीं किया जा सकता, व्यक्ति कहां से कहां तक नहीं पहुंच जाता। वो मानो किसी ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ हो, समाज के ऐसे एक वर्ग में उसका जन्म हुआ हो जिसलिए मानो लगता है कोई रास्ता ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन आत्मविश्वास के द्वारा वो अपने स्वप्रयत्न के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और ऐसे हमारे सामने भरे पड़े हैं, हमारे पास ऐसे विचार भरे पड़े, ऐसे उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं। दूसरी बात जो स्वामी जी ने चरित्र के बारे में कही वो है एकाग्रता। हमें एकाग्रता, मन की एकाग्रता पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है सत्य, अर्थात सत्य को जीवन में उतारना। सत्य को उतारना अर्थात सत्य बोलना और सत्य वचन रखना। श्री रामकृष्ण देव इस पे बहुत बल देते थे, जितना हो सके तुम बिना किसी वजह से कोई अपने वचन को मत दो। जैसे कि रामचरितमानस में आता है, रघुकुल रीति सदा सी जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए, यहां तक कि प्राण भी चला जाए लेकिन वचन को नहीं छोड़ो। तो सत्य पर बहुत बल दिया स्वामी विवेकानंद ने। और एक बात जो उन्होंने बात कही और उसी के साथ में अपने इसको मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि निस्वार्थ सेवा। ये निस्वार्थ सेवा, स्वामी विवेकानंद अपने कर्तव्य में यहां तक कहते हैं कि निस्वार्थता ही मानो भगवान है। जितना व्यक्ति अपने आप को निस्वार्थ कर सकता है और उस भाव से सेवा कर सकता है, उतना ही वो महान है। हो सकता है कोई व्यक्ति कभी मंदिर भी ना गया हो सकता है उसमें उस प्रकार का जो एक औपचारिक धर्म की बात होती है
वो भी उसके पास ना हो, लेकिन अगर वो निस्वार्थ है तो उसके समक्ष स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में कहते हैं उसके सामने बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाता है। अरे ये तो पूरा का पूरा इसमें अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं, ये सिर्फ दूसरों की बात सोचता है। तो मूलतः हमें ये बात याद रखनी है कि कैसे हम अपने इस चरित्र निर्माण के जो कार्य है, जो आदर्श है, उसको हम जीवन में आगे ले सके। अब ये नहीं कि एक बार कार्य हो गया, हमें उसको चरित्र निर्माण के कार्य में कभी कभी हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर अपना जो कार्य आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी सेल्फ गोल्स करते हैं, कभी ऐसी चीजें करते हैं कि जो हमें नहीं करनी चाहिए, जब तो फिसल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो चरित्र निर्माण के रास्ते पे चलता है उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, जो अक्सर लिखा होता है पहाड़ों के रास्तों पे कि अगर किसी की सावधानी घटी, अर्थात उसके वो सावधान नहीं था, उसने असत्य बोल दिया, उसके जीवन में असंयम आ गया, उसके जीवन में कुछ ऐसी गलती कर दी नैतिक या कुछ दूसरी गलती कर दी जो नहीं होनी चाहिए थी। उसको दूर करने के लिए क्या है, एक तो उसे सावधान रहना होगा और दूसरा उन महान चरित्रों का सब समय चिंतन करना होगा जिन्हें हम, जैसे कि हम मानवताओं को, हमारे ऊपर बड़ा हमारा एक सौभाग्य है कि हमारे सामने ऐसे एक महान चरित्र है, जैसे हम श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद और इसके अलावा भी जितने भी महान व्यक्ति जहां भी ये चरित्र गुण हमें दिखाई देते हैं, उनको सामने रख के उनका चिंतन करें, उन्हें बार बार अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, तो अवश्य ही जो चरित्र निर्माण का रास्ता है वो बड़ा ही सरल हो जाता है। हम चाहे कभी भी कहीं भी हो, ये चरित्र निर्माण वैसे ही है। मुझे स्मरण आ रहा है श्रद्धेय स्वामी बुधानंद जी महाराज, जो बहुत साल पहले रामकृष्ण मिशन दिल्ली में थे, वो एक बार इस विषय को बोलते बोलते बहुत भावुक हो गए थे। वो कह रहे थे कि तुलसी, जैसे तुलसीदास जी का जन्मदिन था उस दिन, लेकिन वो तुलसी के सिर्फ वहीं तक ना सीमित करके तुलसी के पौधे पर आ गए और बोले, देखो तुलसी जो है ऐसा एक पौधा है जहां भी उग जाए वहीं उसकी पूजा होती है। अगर गमले में है तो उसकी पूजा होती है, और अगर किसी चट्टान के बीच एक थोड़ी सी मिट्टी में अगर वो उग जाए वैसे ही वहीं भी उसकी पूजा होती है। वैसे ही जब व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है, वो चाहे कहीं हो, चाहे उसके पास बड़ा ओहदा हो या छोटा ओहदा हो, कहीं वो उसके पास ऐसे समाज में वो किसी भी जगह में रहे, उसके प्रति जो श्रद्धा है वहीं से उत्पन्न होती है। तो तुलसी से, तुलसी के पत्तों से, तुलसी के पौधे से हमें यही सीख मिलती है। कहते कहते वो बहुत भावुक हो गए थे। तो आज के इस अवसर पर ये कुछ बातें कहने का हमें सौभाग्य हुआ। आप सबने बड़े मनोयोग से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Atmashadhanand Maharaj, for your powerful speech. You said, an integrated development of heart, head and hand is the basis for developing a strong character. And also, by identifying with our true nature, the Atman, which is different from body and mind, and regulating the body and mind through moderation is a way to control body and mind. Thank you. Now, I request Swami Shruddhananda Maharaj, Adhyaksha Advaita Ashrama Mayavati, to come over and deliver a service. Thank you.
Jagabdijamadyam Niriham Nirakaram Omkar-Vedyam Yato Jayate Padyate Yena Vishvam Tamisham Bhajeliyate Yatra Vishvam Hari-Om Tat-Sat. Hari-Om Tat-Sat. Hari-Om Tat-Sat. Revered Swami Felicitation Maharaj, Swami Ramakrishna Maharaj, and all the revered sannyasis assembled here, my devoted pranams to all of you. Sri Somnath Bhattacharya and all the dear devotees assembled here, my affectionate namaskars to all of you. It gives me a great sense of joy to be present here on this very important occasion of the centenary of this beautiful center at Jamshedpur, for which I express my gratitude to Revered Swami Amrita Rupananda, who gave me this invitation, and I am honored. Today's this topic of discussion is a very important one. Its importance cannot be over-exaggerated. That is, what is the need to develop a strong character? Why do we need men and women to be of a strong character? Why? If we just study Swami Vivekananda's works, we have studied some of his works, you will find Swamiji stressing this point repeatedly. He says, what the world today wants is character. The world is in need of those whose life is a burning, selfless love. It is that burning, selfless love which will make every word tell like a thunderbolt. We want brave, bold, pure, selfless men and women. 100 such in the world shall be revolutionized. 100,000 such men and women, fired with the zeal of holiness and fortified by their eternal faith in the Lord, would go throughout the length and breadth of this land, preaching the gospel of salvation, the gospel of social raising up. These are the very powerful exhortations which we find in Swamiji's speeches, his letters, and Swamiji has stressed this point to its utmost, because it is this one point, men and women with towering character. This is the one thing which is going to bring about two wonderful transformations in the society. Again, the question is, why do we need to develop a strong character? Because it is this men and women with strong character which can ensure the well-being of the entire human society, number one. And the other side of it is that it is only the men and women of a strong character who can attain the spiritual goal in life. So if you just look into the subject, why do we need to have a strong character? Its purpose is twofold. One is the well-being of the entire society, and the other is one's own individual well-being. Now the next question comes. How do we develop a strong character?
what is the way to develop a strong character? If we go to our scriptures, our shastras, we will find that when a human being adheres to the principles of Dharma, it is through the adherence to the principles of Dharma that a human being can develop a strong character. Now the next question is, what do we mean by Dharma? Now this Dharma term is a term which has got a wide range of meanings. But here in this context of this character development, Dharma means the best thing that we quote from Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam, there, Bhagavan Shukadev, he talks about Dharma and he presents Dharma as a bull with 4 feet. This bull has got 4 feet. Dharma has got 4 feet. What are these 4 feet of the Dharma? So he says, Dharma is comprised of 4 important ingredients. Number 1, Satya. Number 2, Tapa. Number 3, Shaucham. And number 4, Daya. What does it mean? Dharma is made up of Satya, truthfulness. It is made up of tapas. Tapas means austerity. Austerity means this capacity of the human beings to restrain themselves physically, mentally, the control over the sensory system and the control over the mind. This is what goes into this wonderful discipline called austerity or tapas. This is an important ingredient of Dharma. Third point is Shaucham. Shaucham means purity, physical purity as well as mental purity, leading a pure life. And the last point is Daya. Daya means compassion. Now, when a human life is based upon these 4 beautiful virtues, the virtues of truthfulness, the virtues of self-control and self-restraint, the virtue of purity, external as well as internal, and the virtue of Daya, compassion, that person is bound to become like a God-like individual. Now, let us just look at the opposite of this. When we do just the opposite of what has been stated till now, what will happen is that we will be leading a life which is based upon adharma. A life based upon adharma is that which is based upon untruth, asatyam. That which is based upon sensory indulgences. It cannot be austere life, it is just the opposite of austerity. It is a life which is given to hedonistic pleasures. Adharma means it is a life which is given to impurity. And adharma means it will be a life where the man and the woman will not be compassionate, but he will be leading a life which is based upon enmity, cruelty, etc., etc. Now, when the human life is based upon these things, what is actually happening is, that is best expressed in the words of the great thinker, Bhartrihari. Bhartrihari says that Yesham na vidya na tapo na dhanam na jnanam na sheelam na guno na dharma te martyaloke bhuvibhara bhuta manushya rupena pragascharana. Beautiful utterance which tells us what happens when a human being leads a life based upon adharma. He will become an animal moving in a human form. Manushya rupena pragascharana. Esham na vidya na tapo na dhanam. A person in whose life there is no vidya, there is no tapas, there is no dhanam, there is no jnanam, no sheelam, no guna, no dharma. They martyaloke bhuvibhara
saying that person will be a burden on this Mother Earth. And he is just like an animal moving in a human form. This is the outcome of a life which is led based upon adharma, manushya rupena mrigascharam. Now the opposite picture of this is, we can say, it is manushya rupena devascharam. When a human being leads a life based upon dharma, he will be gods moving in human forms. Now Swami Vivekananda wanted exactly this. He wanted to transform the human society by increasing the numbers of human beings who are actually godlike. Now we may ask this one question. This seems to be a very poetic picture which Swamiji is painting, where we have godlike men and women moving around in the society, not animals and devils moving in the human form. Do we have a real example of this? Did we ever have a state where society was filled with such godlike human beings? Yes, we had such a state where in India itself, let us go back into history. When we go back into history, we have to use that wonderful term, once upon a time. When we go back 1,000 years, 1,500 years, before the Islamic invasion took place in this land, we see an India which is totally different from what we find today. Let us not forget this point that India was known to be Aryavarta. This is the Arya Bhumi. And what do we mean by Arya? Swami Vivekananda talks about this in his complete works. This is Aryavarta. Bharat is Aryavarta, Arya Bhumi, and we are all Aryaputras. Now the next question is, what do we mean by becoming Aryas? So the definition of Aryas, a very famous scholar is giving this definition of Arya. Who is an Arya? He says, Asabhyata Guracharadi Doshebhyo Duram Gatah Shiksha Sabhyata Vidyadibhi Devas Padatvam Prapta Iti Arya. A beautiful definition. He says, Asabhyata Duracharadi Duram Gatah. A person who has become devoid of asabhyata and duracharanam. A person who has become freed from evil conduct and uncontrolled conduct. Very important point. And then he says, Vidya Sabhyata Shiksha Dibhi Devas Padatvam Prapta. Through Shiksha, through Sabhyata, and through Vidya, he has almost become like a godlike person. He is an Arya. In short, Arya means what? Atyanta Susanskrita Vyakti. A human being who is Atyanta Susanskrita. Now just imagine, my dear devotees, India was Aryavarta. The very name of this land is where such Aryas inhabited this great subcontinent called Bharatvarsha. And it is because of this that India was so prosperous. Let us note one point. The prosperity of India was not the prosperity of just like the Westerners or the Europeans. They became prosperous by looting all other continents. India was prosperous not by looting other continents. India became prosperous because of such men and women of towering character. We should know, this again reminds me of that wonderful definition that Bhagavan Shankaracharya gives in his Gita Bhashya. In his Gita Bhashya he says, you see, we were talking about Dharma. What is this Dharma? Shankaracharya says, Dharma is that it is Abhyudhaya Nishreyasa Sadhanam. Dharma is what? It is the sadhanam, the means of attaining Abhyudhaya as well as Nishreyasa. So beautiful. When we lead a life which is based upon Dharma, its direct outcome is going to be Abhyudhaya. Abhyudhaya means material prosperity, and Nishreyasa means spiritual illumination. This is exactly what Swami Vivekananda was talking about. We want men and women of towering character.
And this towering character can be built upon only when we begin to adhere to the principles of Dharma. When we deviate from the principles of Dharma, what will happen is we will be having devils moving in human forms. And contrasting to that, we have another picture, that is gods moving in human form. Manushya Rupena Deva Sharanti. Now, that is the great work which Ramakrishna Mission's educational institution has been doing. Now, this institution, Jamshedpur, this educational institution here, which is completing its 100 years, what has it done? All our educational institutions in the Ramakrishna Mission, I consider them to be like temples where we strive to bring about men and women who are gods in human form. After all, that is the main purpose of education. As Swami Vivekananda says, education is not the amount of information which we put into our brains and which runs right there. Education should create God-like men and women. And that can happen only when the human being's life is based upon the principle of Dharma. The great Dharma which means Satyam, Tapa, Shaucham and Daya, as Srimad Bhagavatam says. So this is the one reason why we need to develop character. If we have to bring back the old days of India, just imagine, this is a beautiful point which is coming to my mind. When we look into the ancient India, where the situation was like this, it was a land inhabited by men who were like gods. Now, is this just a poetic, emotional kind of a statement? No. All of you know the great travelers from China, the Arabian travelers who came into India, they all have left their documents about what they found in Indian society. All of them have said, when they came, they were astonished to see this land. They said that in this country, we have not found anyone speaking a lie. In this country, we have not found any dishonest dealing. In this country, they have not found anyone stealing or robbing others. Can you imagine? The Arabian traveler writes that this is the one country where people leave their houses open and they go to other villages to do some business transaction. Can we imagine such a thing today? Today, in our own houses, if one person is moving from one room to the other room, he is suspicious of every other person. So how much of a degradation in our ethical sense and moral sense has happened, you can see from that. So this painting of Aryavarta is not just a poetic effervescence of some poet. It was the ground reality, it was a fact. This is Aryabhumi, men and women of great, towering character. Swami Vivekananda wanted India to once again go back to that state and set an example for the entire world. Now this is the meaning of becoming Vishwaguru. If India has to become Vishwaguru, it means that it has to set a benchmark, a standard of ethics and morality. We have to bring back those great days of the past. Now, second point, I'll just touch upon that and I'll wind up my talk. The second point, Swamiji says, now, if we have to have spiritual illumination, even for that you need a very strong character. A person whose life is not adhering to the principles of truthfulness, a person whose life is not adhering to the principle of austerity, self-restraint, a person whose life is not given to compassion and purity, that person will never understand the infinite potential and the infinite divinity which is residing in each one of us. So for both these purposes, you will see the development of a strong character is indispensable. In short, as the great Shankaracharya says, Dharma means what? It is a sakshat abhyudhaya vishreyasa sadhanam. It is a direct means to material prosperity as well as spiritual illumination. In our Puranas, just 2 more minutes. In our Puranas, we have the mention of the 4 great yugas: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, and Kali Yuga. What actually it means is
There was a state of affairs at a certain time where every member of the human society, they cling to the principles of Dharma. That is Satya. And from there, a slow degeneration sets in. In Treta Yuga, you will find slowly adharma entering into the society. And in this way, in a progressive manner, gradually, finally we come to Kali Yuga, where adharma dominates. And only a few, small number of people, they cling to the principles of Dharma. I always say, in recent times also, India, after our independence in 1947, we all, right from our childhood, we have seen our society. We have grown up in a society surrounded by all corruptions. It used to be such a sad and depressing kind of a state. All of us have grown up in that kind of a society. And we used to feel disgusted that when are we going to come out of this disease? And in spite of that, in spite of this Indian society gripped by this cancerous disease of immorality and unethics, the disease of corruption, in spite of that, today, my dear devotees, see the promising scene. Today, India is the 5th largest economy in the world. Very soon, we are going to become the 3rd largest economy in the world. By 2047, we can expect to be at par with the most powerful nations of the world. And remember, this development cannot happen without the presence of a large chunk of extremely ethical and moral people. If this has happened in India, it is only because there has been greatly ethical and moral, God-like men and women, even in our own times. Without that, this great development would not have happened. So our challenge will be to increase the number of these so-called God-like men and women. And that can be done only by adhering to the principles of Dharma, as our great acharyas, great Upanishads, the great Hindu Dharma teaches us. Once again, taking India back to making it the real Aryavarta, the real Arya Bhumi, where men and women, they lead a life which is based upon highest sense of ethics and morality. That was Swami Vivekananda's wishes. Thank you so much. Thank you, Sudhiranand Maharaj, for your enchanting and powerful speech. You said, men and women with strong character alone can work for the good of the society and for one's own spiritual salvation. And adherence to the principles of Dharma, which comprises of Satya, Tapa, Shaucha and compassion, truthfulness, restraint, purity and Daya. This only can make a man of strong character. And our education should make God out of men. And men who are based on these 4 principles of Dharma will verily become God. And for our nation to become a developed country in another 25 years, majority of the people should have a higher sense of ethics and morality. Thank you very much. Now, there's a break for tea. This break is for 15 minutes, and again we will meet the second half of this first session. There's a change of topic, and the new topic will be Srimad Sharada Devi as Sangha Janani in guiding the Ramakrishna order at its formative stage. Swami Achyuteshanandaji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission, Narottam Nagar, he will speak in English, followed by Somnath Bhattacharya, Dr. Somnath Bhattacharya, Associate Professor, Mechanical Engineering Department, Jadavpur University, Kolkata, and then General Secretary Maharaj, Swami Sudhiranandaji Maharaj, he will give the address of the Chief Guest.